दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब बच्चे 1 बिलियन किड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। वो तशद्दुद किसी भी सूरत में हो, उनके वालिदैन की जानिब से, उनके असातिज़ा की जानिब से, उनके फर्स्ट एक्वेंटेंसेस की जानिब से, लेकिन ये तशद्दुद उन बच्चों पे किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एक तंजीम पॉलिश्ड मैन अब इस हवाले से कैंपेन कर रही है गुज़िश्ता 5 साल से, और अब उन्होंने पाकिस्तान में शनीर अकरम के जरिए बहुत सारे पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इंगेज किया है और एक नेल पेंट करके, एक नेल पॉलिश करके वो इन बच्चों के साथ यकजहती की बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज सेलिब्रिटीज आर टॉकिंग अबाउट इट, और स्पेशली जो हमारी मेल कम्युनिटी है वो आगे इस हवाले से बात कर रही है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है शनीरा अकरम और साथ में अदनान सदीकी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो शनीरा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा, एंड अदनान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। व्हाट इज दिस कैंपेन, बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग वेरी मच इन Pakistan, polishment, PK, what is the motive behind it? This is a campaign that had been run in Australia for the last 4 years, which had an overwhelming response. And I knew the team in Australia, and we came together in lieu of all of the incidents and all of the cases that are coming out at the moment, all affecting everybody. So I thought this campaign could fit in with Pakistan and empower men of the country to stand up. You know, a lot of the time it's us women and families saying no, and the men are being victimized here, but men really should be empowered. And this is a campaign to get everyone together, stand up. And how amazing was it? Like, all these men, it looks so good. They all came together, they were all on it, said yes straight away. And I think it's a topic we all really sympathize with and show a lot of empathy with. And we need to do something about it. It's very different, Adnan, because as Humayun was saying that we all are painting one nail. So कितना important है ये कि इस पे बात की जाए और specifically masses तक हम ये बात भी पहुंचा सकें? First of all, Srinidha, thank you so much for bringing this campaign to Pakistan and making this awareness amongst us. देखिए, मैंने जब ये लगाया और अपना नेल पेंट किया तो कुछ लोगों ने थम्स अप किया, कुछ लोगों ने थम्स डाउन किया, कुछ लोगों ने कहा कि यार इससे कैसे होगा कि आप पेंट नेल करने से ये अवेयरनेस कैसे बनेगी। मैंने कहा भाई देखो यार, मैंने अगर ये पेंट नेल किया है तो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं लोगों में पहचाना जाता हूँ, और मेरे जैसे और जो मेरे दोस्त हैं वो लोगों में पहचाने जाते हैं। जब आप पहचाने जाते हैं और जब आपकी एक आवाज़ मायने रख सकती है, तो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। लोग पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं आप। तो मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है, और ये बच्चों के लिए, ये कोई बेटियों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए। अगर आपको बताऊं कि 2019 में 3,900 केस सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं, बाकी हो नहीं पाए हैं। ये तो सिर्फ जो हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, और बाकी लोगों ने जो छुपा लिया। तो हमारा जो मकसद है इस कैंपेन के साथ जुड़ने का, एंड स्पेशली I took this thing very seriously, and one of the reasons I'll be talking both in Urdu and English. I can understand you. I'm okay, fine. you can. अच्छा, फिर मैं उर्दू में बात करता हूँ, आप अंग्रेजी में, मैं उर्दू में, ठीक है। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इंसानियत के लिए बच्चे जो होते हैं वो आखिरी कड़ी होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कि ये एक, मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग सोच भी कैसे सकते हैं। ये इंसान है, मतलब जानवर भी दूसरे जानवर के पास नहीं जाता जब तक उसका कंसेंट ना हो, या दूसरी चीज़, या जब तक वो बालिग ना हो जाए। आप कौमों के बिहेवियर का पता चलता है बच्चों को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इट्स ऑल अबाउट स्पार्किंग अप द डिस्कशन। एक डिस्कशन शुरू करनी है, एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। लोगों के लिए बच्चों पे तशद्दुद, दे आर प्रीटी नॉर्मल विद इट, दे डोंट थिंक इट्स एन ऑफेंस, दे डोंट थिंक इट्स अ क्राइम, एंड पेंटिंग अ नेल can spark a conversation, can spark a discussion. Do you think it's achieving the objective? I'll bring the same question to you, Shanira, but I'll start with Naam first. नाम होगा, बदनाम ना होगा, या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। देखिए, जब तक आप उस पॉइंट को हिट नहीं करेंगे, उस सेंसी को, कि ये क्यों कर रहे हैं, उस मर्दानगी को, ये लोग अपनी अपनी जगहों पे बड़े एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, they are known for their manhood, ये क्यों कर रहे हैं ये हरकत। तो भाई
اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ سوال کریں مجھ سے, میں آپ کو جواب دوں گا اس کا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے نیل کرنے کا, ٹھیک ہے نا, یا نیل پینٹ کرنے کا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اس کا ایک ریزن ہے, اور ریزن بہت ہی اہم ہے, بہت ہی سیریس ریزن ہے. اور میں سرپرستی کر سکتا ہوں سب کانٹیننٹ کے بچوں کی جو میرے اختیار میں ہے. مجھے یاد ہے میرا بچپن جو گزرتا تھا, میں والدین کو بغیر بتائے, یا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں جا رہا ہوں کرکٹ کھیلنے کے لیے, میں جا رہا ہوں گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے, اور یہ گھر کے پاس گراؤنڈ ہوتا تھا, اور میں آ بھی جاتا تھا مغرب کے وقت, مگر میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتا. بالکل, اب وہ سیکیورٹی نہیں ہے بچوں کو لے کے. میں جاتا تھا, ایسا نہیں تھا کہ یہ حرکتیں نہیں ہوتی تھیں, تب بھی ہوتی تھی. تو یہ بچوں کو بتانا ہے کہ یہ وہ کیا اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. بالکل. Shanera, this campaign was initiated in Australia. So how was the response in Australia? Overwhelming. We have like so many ambassadors, even from around the world. I know Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, they jumped right on it. Harvey Specter from Suits and Zac Efron even right on States. So it has had an overwhelming response. But in Pakistan, look at the response by these celebrities and sports stars banding together. And it's really about saying to end the violence, we must break the silence. And we could have all these guys stand up in front of you and say we are against child abuse, but that one nail signifies the silence of the millions of children that are at home right now or at school. And why there's no female celebrity endorsing it? So that's the thing, us females are so great. So, but we're giving the men a bit of a chance to sort of stand up, be tough. You know, seeing all these tough guys wearing these nails painted, that's a breakthrough in itself. This is the reason people are talking exactly. about it. So that's why us women, we support. We can also become polished men, polished women. For men, yes. I know my husband's a polished man. It's also about cleanliness and being polished and clean, and that's also part of what we all stand for. That's incredible, but it comes with a lot of responsibility. When you ask people to discuss a taboo in the society, like I posed a question to Adnan Siddiqui, that people don't really think that it's an offense to be aggressive with the children. Do you think that this will spark a conversation and this will just create a sense of realization that this is an offense? Inshallah, I hope so, because you've got to remember, whether it's physical, sexual, it's mental or emotional, all platforms, they're all abuse. So you've got to check yourself and realize if you see a child who is in trauma by any of these motives, then they are suffering abuse. And that's what we need to break open. These are the topics that should be having at home tonight with your children, with your aunties, uncles. This is the thing we're trying to achieve. The masses, they want to like say the same thing in Urdu, if you can just try, because हमारी जो masses है वो से connect कर सकेंगी. Of course, Adnan will do. I don't like the word masses because I like to think we're all one country, and as we get education infiltrates through the whole country. I think we can all stand as one. We all have, each of us have our own minds, our own brains, but now, right now, we're all standing, these guys are standing up to say no to the violence. So this is just the beginning. We तो बहुत कम celebrities आए हैं, but I guess इस campaign को बड़ा seriously लिया जाएगा पाकिस्तान में, और खुदा के वास्ते इस किस्म के सवाल करना बंद कर दीजिए कि यार मर्द को ये क्या जरूरत थी नाखून पेंट करने की. भाई जरूरत है. मर्द को तो तशद्दुद भी नहीं करना चाहिए, मर्द को तो रेप भी नहीं करना चाहिए. जो बारबेरिक एक्ट कर रहे हैं वो मर्द नहीं है. मैं उनको मर्द नहीं कहता. मर्द वो है जो इसके खिलाफ उठें और बात करें. तो I think ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समझाना. But Adnan, at the same time, it comes with a responsibility and it comes with a lot of finances. We need a lot of funds. इन बच्चों को जो गलियों में मौजूद हैं, जिनको उनके वालिदैन ने घरों से निकाल दिया है, तो बच्चे तशद्दुद से तंग आके they've escaped their houses. उन बच्चों को अगर हमने पनाह फराहम करनी है, अगर उनको उस तशद्दुद से निजात दिलानी, that comes with a lot of responsibility. तो वो कैसे एक्टिवेट हो? देखिए मेरे ख्याल में अभी ये शुरुआत है. जहाँ तक हम दूसरी चीज़ों पे हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, हम यही सेलिब्रिटीज कितनी कैंपेन्स कर देते हैं और पैसे आ भी जाते हैं, तो हम इसमें क्यों नहीं कर सकते यार. ये बड़ा सीरियस इशू है. लेकिन तशद्दुद दो किस्म के होते हैं. जिस तशद्दुद की आप बात कर रहे हैं, शायद वो एक इस्लाह के लिए मुझे भी शायद 2-3 थप्पड़ पड़े हुए मेरे वालिद से, मगर मैं जिस तशद्दुद की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है ना.
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک جو ہمارے جو ہیلپ ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں گھروں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں فار اینی سوسائٹی. میں آپ مطلب میں پھول کو دیکھ کے مچوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب دس از ویری ڈسٹرکٹیو. دس از, اور دوسری بات میں ان بچوں کو جو سروائیورز ہیں ان کو مظلوم نہیں کہتا, یہ بڑے مضبوط ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن میں صلاحیت ہے دنیا کو فیس کرنے کی. They have survived. Not only they have survived, ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. ہمیں ان کو یہ سوچ دینی ہے کہ بیٹا اس میں بچے آپ کی غلطی نہیں ہے, اس شخص کی غلطی ہے, اس And also, جنگلی انسان کی غلطی ہے. how can this campaign can give protection to these kids? So I find that the more the country is aware, the more we're talking about it, that is a breakthrough in itself. Because I know when I came here 7-8 years ago, you couldn't talk about subjects like this. It was kind of taboo. Now look at us. We're on national TV with these national and international celebrities standing up for what the one biggest problem. This is like the number one problem that is on everyone's minds and hearts right now, and that is child abuse in this country has got to stop, every form. Definitely. Thank now you very you much. need your nails Oh, painted. sure. So one thing I would like to add over here. اچھا, یہ ایک ٹراما ہو کسی بھی بچے کے لیے تو ان کو ایک باقاعدہ ان کی ایک ریہیبلیشن کے اندر جاننا پڑے گا, ان سے بات کرنی پڑے گی, ان کو ڈاکٹرز کے ساتھ ملانا پڑے گا. اور کوئی بری بات نہیں ہے اس میں, کسی شرنک کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں ہے. اپنے مینٹل کو سٹیبلائز کرنا کوئی بری بات. کیونکہ عدنان بات یہ بھی ہے کہ کاش اگر یہ پہلے بھی کر لیا جاتا تو یہ جو آج تشدد کریں یہ بھی بچپن میں کسی تشدد سے گزرے ہوئے ہیں, تو یہی ان کے مینٹلی ریپرکوشنز ہے جو کیسے سامنے آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ شنیرا, تھینک یو سو مچ عدنان, آپ ہمارے شو میں آئے. ایگزیکٹلی جناب, اور اس دوران میں نے بھی اپنا ایک نیل جو ہے وہ کلر کر لیا ہے, اور یہ اور میں سوچی میں اپنا ایک نیل جو ہے نا وہ پینٹ ریموو کر لوں. ایسے میں خواتین ایسے کر سکتی ہوں, خواتین ہے نا, خواتین نے سارے نیل پالش لگائی ہوتی, تو وٹ آئی ڈو کہ میں یہ ریموو کر لوں گی. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.